Okay, good morning students. Welcome to day 11 of learning R. So this will be the third video of HTML where we are learning that what all when we are using R Markdown, then all options do we have for converting those files into an HTML document and उसमें क्या-क्या हम options change कर सकते हैं. ओके सो कल हमने देखा था वी वर एबल टू क्रिएट द सेक्शन हेडर्स हेडिंग सब हेडिंग्स हमने उसमें बनाए थे जैसे वर्ड में बनाते हैं हाइपरलिंक्स हमने बनाए थे and then formulas also we have done. Now today we will be learning something like जो कोड ऑप्शंस हैं जो आपका कोड चंक है उसके अंदर हम कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें आपकी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए या हाईलाइटिंग करने के लिए या आप कोई फंक्शन उसमें ऐड करना चाहते हैं या उसमें कोई फॉर्मूला काइंड ऑफ की ट्रू और फॉल्स चेक करना चाहते हैं देन फर्दर कोई प्रोसेसिंग करना चाहते हैं देन दोज थिंग्स वी विल चेक कि हाउ यू कैन इंक्लूड दोज थिंग्स इन योर कोड चंक्स. So let's start. We'll start with code chunk options. Okay, because it is considering it as a double hashtag, so it is showing that whatever it is written, the color is changed, right? So you can see क्या ऑप्शन आएगा इसमें आपका you will be having the same thing as it is written. अगर आपने इसको सिंगल हैशटैग यूज किया होता तो क्या होता आपका हेडिंग बन गया होता. ओके हेडिंग स्पेस ऐड करना पड़ेगा देन यू विल सेव इट या हेडिंग बन गया यहाँ पे. ठीक है सो वी आर नॉट इनटू द हैबिट ऑफ हेडिंग वी आर नॉट क्रिएटिंग द हेडिंग so we will create just the code chunk option and so whatever we will write will be written as it is. Okay, so these are the what are these? These are the options for your R Markdown file on how knitr interpret the code chunk. Alright, so there are certain functions like eval and the formality और जो इसको लिखते कैसे हैं capital T or F. So what it will do, it checks whether or not to evaluate the code chunk. Okay, so let's see अपना कोई कोड लेकर आते हैं how we will see कि how this thing is functioning. So कोड ऊपर से लेकर आते हैं कोई सिंपल सा कोड. Okay, we are taking this code and then pasting it here, and now if I put eval somewhere in this, we will be putting eval here r comma eval. So as you can see eval का option यहाँ पे automatically आ गया and if it is considered to be false then ये क्या करेगा, let's see. Okay, okay, so जब हम इसको F यूज कर रहे हैं यहाँ पे and then we are trying to run it, then आपको रिजल्ट दिख रहा है it is printing only the कोड सेक्शन. तो यानी कि जो इसमें जब हम F यूज करते हैं और इवैल्यूएशन ऑप्शन को जब हमने फॉल्स पे सेट किया है देन इट इज नॉट प्रिंटिंग द रिजल्ट. कि इवैल्यूएशन का जो रिजल्ट आया वो प्रिंट नहीं कर रहा है, सिर्फ आपका कोड प्रिंट कर रहा है. नाउ लेट्स सी इफ इसको हम टी में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रू में कन्वर्ट कर देते हैं, देन हाउ इट बिहेव्स. इट विल नाउ प्रिंट योर कोड एंड एज वेल एज योर रिजल्ट सेक्शन. कि आपका रिजल्ट यानी कि हेड आपने मांगा था टूथ डेटा का जो डेटा सेट उसका हेड की स्टार्टिंग के 6 लेन्स आपने मांगी थी, सो दैट आल्सो इज प्रिंटेड. सो दिस इज हाउ योर eval function works. Now there is another function which is known as your echo function. Let's see what is echo function. Echo, again it will be considered as true or false, and now what it does, it checks whether or not to
show the code chunk, but the results will be printed. Okay, now let's see if it is doing what it is saying. इधर हम चेंज कर देते हैं इसको echo से. Okay, and echo is false. Let's see what it does. So in any case, whether your echo is working, when your echo is false, the only the result will be printed. So it is basically showing whether or not to show the code chunk. अगर आप कोड चंक दिखाना नहीं चाहते हैं तो आपको उसको false में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड इफ आपको कोड चंक दिखाना चाहते हैं, वॉट एवर योर कोड इज वो आपको दिखाना चाहते हैं, देन यू हैव टू गिव इट एज ट्रू. ऑलराइट, सो ट्रू कन्वर्ट करके देखेंगे. Then we will see there will be a code display with the echo function also. It's basically, so eval और echo काइंड ऑफ सेम है, बट उनके ट्रू फॉल्स की वैल्यूज पे आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा. ठीक है. नाउ इफ वी लेट्स सपोज इफ वी आर डूइंग, इफ यू आर यूजिंग बोथ द फंक्शंस echo and eval and both are true. So let's see उसमें क्या होता है. और दोनों को फॉल्स करके देखेंगे, एक बार दोनों को ट्रू करके देखेंगे. सो जब दोनों ट्रू हैं, दोनों ट्रू हैं तो आपका कोड भी डिस्प्ले होगा और आपका रिजल्ट भी डिस्प्ले होगा. और जब दोनों फॉल्स होते हैं तब क्या होता है, तब देखते हैं, तब आपका तब आपका कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि दोनों के आपने वैल्यू फॉल्स कर दी है. नाउ मूविंग टू अनदर ऑप्शन, दैट इज कैश. सो व्हाट इज कैश? कैश इफ enables enable the same code chunk will not be evaluated the next time that the knitter is run. It is great for codes that have long running time. So it basically it gives an option कि आप इसमें कोई चीज़ का कोड का जो पार्ट है वो हाइड कर सकते हैं, या वो कोड को आपका निटर चलाएगा नहीं जब तक आपने उसको अगर उसमें आपने कैश का ऑप्शन डाला है. ओके, नेक्स्ट इज योर fig width or fig dot height. So what they does, the graphical device, basically these are the these codes are for changing the height and width of your output figure. जो भी आपके जो plots बनेंगे, जो figures बनेंगे, they are here to change the height and width of those figures. Size of the plots in inches. Alright, the figures are the first written to knit document, then to files that are saved separately. Okay, and same wise out dot width or out dot height, ये क्या करेंगे, the output size of the plots in R doc. ठीक है, ये आपकी लेंथ और ब्रेड्थ चेंज करने के लिए ये ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं. कब देखेंगे इसको यूज करके अभी कैसे करते हैं. और ऑप्शन क्या है हमारे पास, एक ऑप्शन है हमारे पास fig डॉट कैप का. सो ये बेसिकली कैप्शन ऐड करने के लिए आपकी किसी भी फिगर में. सो लेट्स सपोज इफ यू आर एडिंग फिगर 1 and you are giving the name it as guinea pig
tooth data set। कैप्शन को यूज करके देखते हैं हम कैसे यूज कर सकते हैं कैप्शन को। पहले आपको फिगर वाला कोई कोड लेना पड़ेगा जहाँ पे हमने फिगर बनाई है। सो दिस वाज योर कोड ऑफ फिगर। ओके, नाउ paste it here and then add fig dot cap। ओके, फिग के साथ कोई कोड आ रहा है क्या? फिग तो आपका जो फिग वाला ऑप्शन है यहाँ पर आएगा फिग डॉट कैप। आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से एंड देन यू कैन टाइप वट एवर नेम यू वांट टू टाइप हियर एज फिगर 1 का हमने नाम रखा था यहाँ पे फिगर 1। राइट, and then let's try to run this code। Okay, so it is creating a figure and the name of the figure is, the caption has been generated as figure 1 guinea pig tooth data set। Okay, so आपका whatever the value, these are options are written in your आपका जैसे कोड शुरू होगा आपका R के बगल में कॉमा लगा के you have to write these all the things। Now what else we can do in here, we can also create table of contents, like जैसे word file में आपको table of content बन जाता है, the same thing you can also do in R Markdown, table of content। Okay, we can add the table of content by altering the YAML code। Now what is YAML code वो मैं आपको बताता हूँ। it is the weird code that is written at the top most region of your R Markdown file। कहाँ पे है वो? सो ये वाला कोड है आपका, दिस इज योर YAML कोड। तो अगर आपको कोई भी चेंज करना है टेबल ऑफ कंटेंट में तो आपको यहाँ पर जाके करना पड़ेगा, या टेबल ऑफ कंटेंट बनानी है तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज टाइटल इज R Markdown, आउटपुट इज दिस, डेट इज दिस, and now what you can do is here you can add your table of content, sorry, HTML underscore document, HTML document, and then again tab and TOC, yeah, TOC is equal to true। Now let's try to save this thing। So it is saying some error is in YAML code। So इसमें ये चल क्यों नहीं रहा, बिकॉज HTML को हमने को डिफाइन नहीं किया है। So we are putting it as output colon HTML document, and then we are shifting to this and then the colon and then yes, stock true। Okay, now let's see if it is working। Again halted। Okay, so the error I think is ये output दो बार लिखा हुआ है, तो we can delete this output line and then we will try to run it। Okay, now it is running। So here you can see because we have declared the TOC table of content, so now you have a table of content like in your Word document you have so section header, and these all things are dependent upon the headings that you have created। Like section header का आपने number 1 level का heading दिया था तो उसके हिसाब से आपके
सारे लेवल्स क्रिएट होकर आ गए हैं। आर मार्कडाउन आपका टाइटल का डॉक्यूमेंट था, डॉक्यूमेंट का टाइटल था। एंड देन लेट्स सी इफ TOC can, if it is written in capital letter, then also it can work or not. Yeah, it works. Oh no, it doesn't work. So TOC in caps it is not recognized. So in TOC should be in small. So now you will have the TOC or table of content. So now what else you can do? What else we can include here, like in the Word document, when there is a navigation function कि आपका side में आपका ये सारी headings की एक line बनी हुई आ जाती है, and then you can click directly on the heading, and then you can go directly to the web page. So we can include a variable here as talk underscore float, and इसको अगर हम true पे set करते हैं, then let's see what happens. Talk underscore float. Yeah, see here you are getting different headings. Section header, first level, then you are these are the the links to the different link और headings. आप directly उस कोड चंक पे जा सकते हैं और directly आप अपने उस desired heading पर जा सकते हैं, just like in your Word document. So talk float is that function. Now let's talk about the tab. और what are tabs? So table of content हो गया. Now let's talk about tabs. So we can also add tabs in our output report. We just have to use the function curly bracket dot tab set and then close this curly bracket after the line to which we want to make it as a tab, after the line to which we want to make it a tab. Now this will create different tabs for subheadings that are included in the main heading. So what it does mean, it means let's try to do it. So tab फंक्शन में जैसे मैंने बताया कि टैब सेट का आप यूज़ करें, डॉट टैब सेट का, तो उसको हम यूज़ करने के लिए उसके नीचे हमारे पास सब हेडिंग्स होनी चाहिए, तभी उससे हम टैब्स बन सकते हैं. तो अगर इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका कोड है कोड चंक्स डॉट टैब सेट, और उसको अगर हम रन कराएंगे, so then you can see here you are getting the tablet formation in within your web page के hyperlinks आ गए, जो भी इसके अंदर सब हेडिंग्स थे वो आपके आगे आप उसके टैबलेट्स बन जाएंगे, टैब्स बन जाएंगे. फॉर्मूलाज एक आपका आ गया, कोड चंक ऑप्शन एक इसमें ऑप्शन है एक, और टैब्स का एक ऑप्शन है इसमें. सो वट एवर यू आर रिटन इन डबल हैशटैग मतलब कि उससे नेक्स्ट लेवल का जो आपका इंडेंटेशन था वो सारे आपके आ जाएंगे. टेबल ऑफ कंटेंट बिकॉज आपका मेन हेडिंग था, इसलिए टेबल ऑफ कंटेंट का आपका मेन उसमें वो नहीं बन पा रहा है टैब. अगर इसको भी मैं डबल हैशटैग कर दूंगा तो इट कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड. ओके, नाउ इट इज नॉट गेटिंग इंक्लूडेड बिकॉज इसमें स्पेस नहीं है. नाउ या टेबल ऑफ कंटेंट्स का भी एक अगला टैबलेट आ गया इसमें. सो वट एवर द जो उसके नीचे के सब हेडिंग्स होंगे वो सारे आपके इकट्ठे आके आ जाएंगे. ठीक है. सो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें. एक थीम का ऑप्शन भी है इसमें, एक कोड फोल्डिंग का ऑप्शन है और हाईलाइट का ऑप्शन भी है. थीम्स में मतलब आप कलर चेंज कर सकते हैं टैब्स का, और टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, हाईलाइटिंग कर सकते हैं, और आपकी कोड फोल्डिंग भी कर सकते हैं. कोड फोल्डिंग मतलब कि अगर आप जैसे ये वाला कोड है तो जो आउटपुट आएगा आपका आएगा, आउटपुट में कुछ इस टाइप का आएगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कोड में कि ये आपका कोड देखना चाहते हैं आप या नहीं देखना चाहते हैं. यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि अगर आपका कोड जो आपने रन किया उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है और आपको कोड दिख रहा है, बट यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा उसको हाइड करने का और एक आपको डिसाइड करने का. तो कुछ लोगों को कोड देखना होता है, कुछ लोगों को कोड रिजल्ट दोनों देखने होते हैं. सो दैट इज वाई दैट ऑप्शन इज वेरी यूजफुल. So I think this video is also very helpful in terms of understanding what all the functions that are available in your HTML for converting your document into an HTML format. So I hope to see in your next video.